धोनी कैप्टन है, मतलब इम्पॉसिबल जो होता है ना कि अगर ग्रेव से किसी को उठा रहा है, कहता है कि लाश पलट गई थी, तो धोनी कर सकता है. But the only thing that I'm looking forward from RCB is a good Virat Kohli inning. डर तो मुझे अपनी खुद ही की किस्मत से लग रहा है अभी, बस और किसी चीज से नहीं लग रहा है. फैंटेसी ऐसा गेम हो चुका है जब आपको लगता है कि आपकी टीम हार रही है तो मैच फिक्स है. Hello and welcome to सबसे बड़ा खिलाड़ी, a one of a kind online cricket reality series which is all about you guys, the cricket fans. Our weekly contests are going on और आपके सही जवाब आपको gift vouchers जीतने में मदद कर सकते हैं. So stay tuned and keep watching. Talking about of our show, well, if you eat, sleep and dream about cricket, then this show could be your ticket to stardom. आपको बस इतना करना है that you have to log on to svk.crickbattle.com और हमारे साथ फैंटेसी क्रिकेट खेलना है. If you've not got your team already made on the SVK platform, then the time to do it is right now. It is time we bring you up to speed with the trending trends of this season. और अभी जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है, that is ये 10 में से कौन सी 4 टीम्स हैं which will make it to the playoffs, यानी कि top 4. तो बिल्कुल नई टीम्स आर ऑक्यूपाइंग द टॉप 2 spots of this season so far. गुजरात टाइटंस फॉलोड बाय लखनऊ सुपर जायंट्स. लेकिन बाकी की टीम्स का क्या हाल है? There has been, comes to Gujarat, there is an extremely confident side. From Shubman Gill at the top to all the way to Mohammad Shami, right? There are people who can put up their hand and perform at every stage of the game. Even towards the end, Gujarat is going to stay on top. Yeah, whether they'll lift the cup or not, imagine it this way, right? Hardik Pandya lifting the cup in Ahmedabad, that's going to be a fairy tale finish. KKR won't and shouldn't go through also because they don't deserve it. They've played so pathetically. But even then, if you see, KKR can actually still make it to the qualifiers by spoiling the party for Lucknow. Lucknow as a side is a set of number 2s. Right? They don't have any. It's always number 2, right? The second best opener of the Indian cricket team, the second best opener of South Africa. They're all the Samsungs of each of their teams. There is no Apple. There is no Nokia at all. Promising teams. You've got Lucknow. You've got Gujarat. You've got Rajasthan. So Rajasthan के जो टच हो रहे हैं वो पहुंचेंगे, आप देख लीजिए. So Lucknow will also end up with 16 points and KKR will also be at 16 points, and by virtue of winning so many matches, KKR will actually have a better run rate also. So that is like the most hypothetical, ये मतलब कितने दिमाग लगाए इसके पीछे. Can MS Dhoni turn things around for Chennai? Will Chennai make it to the playoffs? अगर धोनी कैप्टन है, मतलब इम्पॉसिबल जो होता है ना कि अगर ग्रेव से किसी को उठा रहा है, कहता है कि लाश पलट गई थी, तो धोनी कर सकता है कि लाश को पलटा दिया और वो जिंदा हो गया. सो आप वो जो कह रहे हो बात बिल्कुल सही है. So CSK, even if they win their remaining matches, maximum number of points they can achieve is 14. बट रियलिस्टिक अगर हम बात करेंगे तो पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज अगर धोनी कैप्टन है तो कुछ भी हो सकता है. इफ यू आस्क मी कि एक बॉल पे 12 रन चाहिए और धोनी बैटिंग कर रहा है तो हो सकता है वो 2 बॉल हो जाए, वो 6 मार दे, अगली बार 6 मार दे. If can is an ability, then they definitely can. But realistically, it's far from reality. So it won't happen. I would give anything in the world to make that happen, but honestly, it doesn't look like it's going to happen. KKR का भी long shot है, but Chennai is like super long shot, super moon shot. क्या SRH होगी इस साल का सरप्राइज पैकेज या फिर will it be पंजाब? You know that the one team that I never ever supported was SRH. But this time I'll have to go a little back on that because the kind of confidence, the kind of combination that they're playing on field is outstanding. But I think it's Hyderabad because their bowling is very strong. Having said that, they've got Rajan, they've got Umran Malik, but the bowlers are fantastic. SRH versus Punjab for me is a no-brainer. It's always going to be SRH, at least for this season. I don't know for the next season whether I'm still going to support SRH at all. I think SRH has a few comfortable fixtures, let me put it that way. SRH for me right now on paper looks a better team to lift the cup than even Gujarat. Oh,
इस बार आरसीबी का जादू चलेगा क्या? इस साल प्लेऑफ्स नमड़े और नो? You are right, Mandar. You know, वो winning mentality नहीं दिख रहा है वो RCB टीम का. But otherwise, if you see, RCB is also not a bad team. मतलब आरसीबी में तो आपने हमेशा से हवा बना रखा है कि कोहली है, चलो अब है ना एबी डिविलियर्स की जगह they've got faith in their team. But वो मतलब वो जुनून नहीं. Like Dinesh Karthik, Maxwell, bowling में Hazelwood, there is Harpale also. All of these players, they are in form. They are doing well also. But somehow that winning mentality is not coming through, I think. Everything they will get to know in the game on Sunday. Sunday they are playing SRH. If they manage to defeat SRH, I think they will make a very strong case for themselves. But the only thing that I'm looking for from RCB is a good Virat Kohli innings, like a Virat Kohli innings. But other than that, there's no expectation of RCB. और अब वक्त हो गया है इस हफ्ते के सवाल का। तो दोस्तों, ध्यान से इस फोटो को देखिए और पहचानिए कि लखनऊ सुपर जायंट्स का ये कौन सा प्लेयर है। क्वेश्चन ये है कि इस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इस आईपीएल 2022 सीजन में। सही जवाब देने वाले 5 लकी विजेताओं को मिलेंगे गिफ्ट वाउचर्स। ऑन दैट नोट, समय हो गया है कि हम ध्यान बढ़ाएं अपने सबसे बड़ा खिलाड़ी फैंटेसी कंपटीशन की ओर और पता करें कि वो कौन सा खिलाड़ी है who has won the weekly fantasy competition in the 5th week. इस हफ्ते के वीकली विनर है यशवंत आदिराजू। $14 weeks waiting and finally there's 1 week that I won. करेक्ट, पर देर आए दुरुस्त है। दिस सीजन आई थिंक सो आपकी स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी काम आ रही है। So I'll probably have the 6 or 7 usual suspects and then play another couple of people who could make that difference, make that little bit of a difference here. I'm talking about 3 to 4 matches wherein I lost the track of the time और टीम बनी हुई थी, so I was lucky. If Yashwant loses this tournament, it will only because of the reason that he did not make the team on time. Unfortunately, because of those 3 games, I think, and one of them was a Butler 100 game, I think. So that is a big change in where I am right now. With Yashwant, he has a lot of subs left right now. He can try and use that for differentials, but those differentials have to work for him also. You know, अब अगर राहुल बटलर ही सेंचुरी मारते जाएंगे, तो then what is a Samson or a Particle going to do? He can have him in his team, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा. I mean, we have reached that stage in the tournament now, where अब जिसका सिक्का चल गया वो जीत जाएगा, and I think there are some. In fact, actually, with Siddharth and Pratik, जिनका 2x इतना अच्छा गया, I would say even Siddharth is now in the mix, क्योंकि he also has a lot of handy subs. And we don't know if there are a couple of more 2x's coming our way, then probably it's more like a makeup for me, but that's the hope. Each 2x is like getting an additional game. That's how I'm looking at it. उदय जी, आज आपने 1400 पॉइंट्स बनाए, लेकिन कल हमारे प्रतीक जी और सिद्धार्थ ने 2,000 पॉइंट्स बनाए। I have never seen that happen before. That was something like out of the box. Out of the box नहीं, किस्मत वाली बातें हैं, आप समझ रहे हो? मैंने आपको कितनी बार बोला। मेरे 2x में तो I can just say, Mandar, I had 6 players from Gujarat. 6 players and they all failed in the same game. वो 6 में से अगर 3 भी चला गया होता, I would have been clear in the lead right now. And testimony to our league, यार, our league is so competitive. आज यशवंत weekly जीता, I think he's the 6th weekly winner in the entire tournament. Yeah, so repeat. 6th unique. So nobody has won the weekly twice. That means like everybody is playing well. अनमोल, ऐसा है कि इस बार मैं टूर्नामेंट में फोकस नहीं कर पाया। I'm so sorry for that. बाकी मैं used to हो गया था ये 2-3 वीकली जीतने में। Very very competitive league, and we are at the business end now. अब देखना पड़ेगा आखिरी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में किसका क्या होता है. But anybody can win it as per me right now. जैसा कि आपने अभी देखा, लास्ट वीक में 2x जैम इंट्रोड्यूस करने के बाद मामला बहुत ही करीबी हो गया था फॉर द वीकली एंड द ओवरऑल कंपटीशन। एंड नाउ टू मेक थिंग्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, वी हैव टीम फ्रीडम बूस्टर। तो ये टीम फ्रीडम बूस्टर क्या है? टीम फ्रीडम बूस्टर है टू सिलेक्ट प्लेयर्स फ्रॉम एनी रोल, सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ ओवरसीज प्लेयर्स एंड अनकैप्ड प्लेयर्स, एंड देयर विल बी नो टीम बैलेंस रिस्ट्रिक्शन। हमारे खिलाड़ी आने वाले हफ्ते में इस ऑप्शन को एक बार जरूर यूज कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है कि ये नया वाला कंपटीशन यानी कि टीम फ्रीडम बूस्टर कंपटीशन
ओवरऑल लीडर बोर्ड एज वेल एज वीकली कंपटीशन पे अपनी छाप छोड़ेगा। अब देखना ये है कि कौन यहां से बाजी मार के आगे ले जाता है। On that note, let's also have a look at the overall fantasy leader. Anmol, this is the first week you have come down from the top spot since we began this season. Anand is now at the top. So do you feel threatened by any specific player right now? हम प्रतीक और जेमिन ट्राई कर सकते हैं फुल ऑन वीकली के लिए। अब मुझे लगता है अगले वीक प्रतीक जी इज गोइंग टू गो हार्ड, like hard, मतलब मैं एक वीकली तो मैं जीत के जाऊंगा। I think no यार, not threatened by anybody in particular. If I can only say one thing, डर तो मुझे अपनी खुद ही की किस्मत से लग रहा है अभी, बस और किसी चीज से नहीं लग रहा है। like because the way things are going, जब मेरा डिफरेंशियल नटराजन होता है, नटराजन सडनली he can't hold the ball only, वो पता नहीं 50-60 रन दे देता है, शामी एक दिन काम कर देता है। So I don't really know what to say. Like मेरा किस्मत पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा डर है। I'm going to try and use as much stats as I can to get things right. उसके बाद मैं ऐसे थोड़ा पूजा करूंगा ऐसे 7:30 बजे तक। मैं नेक्स्ट 3 मैचेस अपने आप को ऑब्जर्व करूंगा। I'll see my standing in the table. अगर लगता है मैं अच्छा स्कोर कर पा रहा हूँ तो ठीक है, अगर उससे परफॉर्म हो जाएगा तो ठीक है, और अगर परफॉर्म नहीं होता तो I'll use my trades like anything. कि अगर मैं अल्टीमेट चैंपियनशिप नहीं जीत पा रहा हूँ तो मैं कम से कम वीकली तो जीतूं। I've been able to bring down the differential that I had with Anand from 300 down to just 100 points now, I think. So 200 का gap तो आज ही cover हो गया है, and there are still some 20-30 games to go. I would say practically it's neck and neck right now. Yaswant का 2x was great, Siddharth का 2x was also great, and I think एक point ऐसा था where it looked like it's going to be a 2-horse race, but it's not a 2-horse race at all. Like, I think in fact अभी कुछ भी हो सकता है। Replacing Anmol Shankhwar at the top, it is Anand Bathija. Well, there is also an interesting observation जो हमारे सामने आया है, वो ये कि प्रतीक, उदय, भान and यशवंत, इनके पास 40 एक्स्ट्रा ट्रेड है as compared to the toppers. And I have a feeling that this might turn out to be the game changers in the weeks to come. Well, असल में क्या होने वाला है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि what about you guys? आपने अपनी टीम बनाई कि नहीं? If you have not, then log on to spk.crickbattle.com and play with us the fantasy cricket game. Next episode में आप सबका फिर से रहेगा इंतजार। तब तक के लिए eat cricket, sleep cricket, and of course talk about cricket, because cricket is not just a game, it is the game.